एंड वेलकम बैक टू चॉपस्टिक मैथ्स। इस वीडियो में हम डीमॉर्स थ्योरम क्या होता है ये सीखेंगे। नाउ कंसीडर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी पावर कैलकुलेट करना है, से द nth पावर, देन z रेज टू n is x plus i y the whole raised to n. Say for example, if n is equal to 8, then z raised to 8 is x plus i y raised to 8. अब ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करना होगा या बाइनोमियल थ्योरम जिसे कहते हैं वो अप्लाई करना होगा। से द कॉम्प्लेक्स नंबर z is 1 plus i, then z raised to 8 is 1 plus i the whole raised to 8. ना इसे कैलकुलेट करने के लिए मुझे बाइनोमियल थ्योरम यूज करना होगा और बट इट विल बी वेरी लेंथी, या बहुत टाइम चला जाएगा इसे कैलकुलेट करने को। तो अगर आपको इजीली 2 या 3 स्टेप में कैलकुलेट करना है तो आप डीमॉर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ डीमॉर्स थ्योरम इज अ वेरी पावरफुल टूल इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू कैलकुलेट एनी पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब हम डीमॉर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कार्टेशियन फॉर्म से आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को। देन that is z is equal to r into cos theta plus I sin theta, where r is the magnitude of the complex number, which is root of x square plus y square, and theta is tan inverse y by x. Theta is called as the argument. So z raised to n is r into cos theta plus I sin theta the whole raised to n, that is z raised to n is r raised to n into cos theta plus I sin theta the whole raised to n. Now this is DeMor's theorem, that is z raised to n is r raised to n into cos n theta plus I sin n theta. ये होता है DeMor's theorem. If z bar is the conjugate of z, that is z bar is r into cos theta minus I sin theta, so z bar the whole raised to n will be r into cos theta minus I sin theta the whole raised to n. Therefore z bar raised to n will be r raised to n into cos n theta minus I sin n theta. तो यह है डीमॉर्स थ्योरम और आप इसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth पावर या nth रूट कैलकुलेट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, यही एग्जांपल देख लेते हैं z raised to 8 which is 1 plus i the whole raised to 8 using डीमॉर्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे z is equal to 1 plus i, और इस नंबर को हमें 1 plus i the whole raised to 8 कैलकुलेट करना है यूजिंग डीमॉर्स थ्योरम। तो स्टेप 1 यही होगा को आपको सबसे पहले कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए x is 1 and y is 1, सो r जो मैग्नीट्यूड है इज रूट x square plus y square, so r is 1 square plus 1 square which is root 2. Theta, that is the argument, is tan inverse y by x is tan inverse 1 upon 1, that is tan inverse 1 which is pi by 4 radian. तो ये देखिए ये जो है पोलर फॉर्म में z is r into cos theta plus I sin theta, so z is root 2 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4. Now we will find the 8th power, that is z raised to 8 which is equal to root 2 cos pi by 4 plus I sin pi by 4 the whole raised to 8. So z raised to 8 will be equal to root 2 raised to 8 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4 whole raised to 8. अब देखिए ये डीमॉर्स थ्योरम है, z raised to n will be r raised to n into cos n theta plus I sin n theta. So this will be z raised to 8 will be equal to root 2 raised to 8 into cos 8 pi by 4 plus I sin 8 pi by 4 as per डीमॉर्स थ्योरम। अब रूट 2 रेज टू 8 इज 16 और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2 pi plus I sin 2 pi. Now sin 2 pi is 0, so I into 0 is 0 and cos 2 pi is 1. So z raised to 8 will be 16 into bracket 1 plus 0 which is equal to 16. So z raised to 8 is 16. यानी 1 plus I the whole raised to 8 is 16. तो देखिए आपने आसानी से इसको कैलकुलेट किया यूजिंग डीमॉर्स थ्योरम। So this is how you can apply DeMor's theorem to calculate the powers of any complex numbers. Now, if z is equal to cos theta plus I sin theta, then z raised to n will be equal to cos theta plus I sin theta the whole raised to n.
Now using De Moivre's theorem, z raised to n will be equal to cos n theta plus I sin n theta. तो हम एक corollary देख लेंगे based on De Moivre's theorem. If z is cos theta plus I sin theta, then 1 upon z is 1 upon cos theta plus I sin theta, that is taking reciprocal on both the sides. So 1 upon z will be equal to cos theta plus I sin theta the whole raised to minus 1. This is as per the law of indices. Now, अभी हम इसे यहाँ पे De Moivre's theorem apply करेंगे. So 1 upon z will be equal to cos theta into minus 1 is cos minus theta plus I sin theta into minus 1 is plus I sin minus theta. So 1 upon z will be equal to cos of minus theta is cos theta plus I sin of minus theta is minus sin theta. So this will be minus I sin theta. So 1 upon z will be equal to cos theta minus I sin theta, or z raised to minus 1 is cos theta minus I sin theta. And similarly 1 upon z raised to n, we can also write it as cos of n theta minus I sin n theta, that is z raised to minus n is cos n theta minus I sin n theta.